वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ड्रॉप शिपिंग के अल्टरनेटिव्स की बात करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। इफ़ ड्रॉप शिपिंग इज़ नॉट राइट फॉर योर ई कॉमर्स बिजनेस, देयर आर अल्टरनेटिव्स। Here are a few options if your goal is to outsource fulfillment. Outsource storing and shipping products with third-party fulfillment. As an alternative to dropshipping, some sellers purchase products in bulk, then enlist the help of a third-party fulfillment service to store items, pick and pack orders, and handle to shipping to customer. This approach allows you to procure products and front potentially at lower cost. You can also assess the quality of items before they ship to the fulfillment center, offer promotions and special offers on products, offer products bundling or subscription services through some providers. If you would like to outsource fulfillment while maintaining control over product quality, learn about FBA. Create your own branded products. At some point in the life of your business, you may require specialty products featuring your own branding. Selling branded products can help your business grow by helping you differentiate your business from the other e-commerce brands, earn customer loyalty, and building a unique online experience. Building a memorable e-commerce brand identity, building brand recognition to help you launch future products, build and assess your brand identity. ड्रॉप शिपिंग के मुतबादल ज़राए, अगर आप ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स के कारोबार के लिए सही नहीं है तो मुतबादिल मौजूद है। अगर आपका मकसद तकमील को आउटसोर्स करना है तो यहाँ कुछ एहतियारात हैं। फ़रीक सालिस की तकमील के साथ आउटसोर्स स्टोरिंग और शिपिंग मसनूआत। ड्रॉप शिपिंग के मुतबादिल के तौर पर कुछ बेचने वाले बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, फिर आइटम्स को स्टोर करने, ऑर्डर लेने और पैक करने और कस्टमर को शिपिंग संभालने के लिए फ़रीक सालिस की तकमील की खिदमत की मदद हासिल करते हैं। ये नुक्ता नज़र आपको मुमकिन तौर पर कम कीमतों पर पेश की मसनूआत खरीदने की इजाज़त देता है। आप ही तकमीली मरकज़ पर भेजने से पहले एशिया के मेयार का अंदाज़ा लगा लें। मसनूआत पर प्रमोशंस और खसूसी पेशकशें पेश करें। कुछ फराहम कंदगान के ज़रिए प्रोडक्ट बंडलिंग या सब्सक्रिप्शन सर्विस पेश करें। अगर आप प्रोडक्ट के मेयार पर कंट्रोल बरकरार रखते हैं, तकमील को आउटसोर्स करने के बारे में जाएं, FBA चाहते हैं, अपने पर ब्रांडेड मसनूआत खुद बनाएं। आपके कारोबार की ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आपको अपनी ब्रांडिंग वाली खास मसनूआत की ज़रूरत हो सकती है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचना आपकी मदद करके आपके कारोबार को बढ़ने में मदद कर सकता है। अपने कारोबार को दूसरे ई कॉमर्स ब्रांड से मुमताज़ करें। एक मुनफरिद ऑनलाइन तजर्बा बनाकर कस्टमर की वफादारी हासिल करें। एक यादगार ई कॉमर्स ब्रांड शनाख्त बनाना मुस्तकबिल की प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में आपकी मदद के लिए ब्रांड की पहचान बनाना एक असासा बनाएं। अपने प्रोडक्ट की शनाख्त। Some sellers find drop shipping supplies to add individual touches like special packaging and branding and create branded products or white label products. Another option is to have a manufacturer produce branded products in bulk, then use FBA for distribution. This method lets you take advantage of Amazon's fast prime shipping, helping you stand out in the crowded e commerce market. Focus on promotion and earn a commission through affiliate marketing. Affiliate marketing is a different business model altogether, but it's worth considering if you prefer to avoid managing customer orders and returns entirely. Affiliate marketers don't sell any products at all. Instead, they promote products for an e commerce retailer and collect a commission when a customer purchases through a unique referral link. While affiliate marketing is an advertising business model as opposed to a retail solution, it can provide benefits such as a minimized startup or overhead cost while allowing you to build an audience and earn money when
products you promote to your audience results in sales. کچھ بیچنے والے ایک ڈراپ شپنگ سپلائر تلاش کرتے ہیں تاکہ انفرادی ٹچز جیسے خصوصی پیکیجنگ اور برانڈنگ شامل کریں اور برانڈڈ پروڈکٹس یا وائٹ لیبل پروڈکٹس بنائیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ مینوفیکچررز کو بڑی تعداد میں برانڈڈ پروڈکٹس تیار کریں، پھر تقسیم کا استعمال کریں یا طریقے کو آپ کو امیزون کی تیز رفتاری پرائم شپنگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے FBA فراہم کرتا ہے، جس سے آپ کو پرہجوم ای کامرس مارکیٹ میں نمایاں ہونے میں مدد ملتی ہے۔ پروموشن پر توجہ دیں اور ملحقہ مارکیٹنگ کے ذریعے کمیشن حاصل کریں۔ ملحقہ مارکیٹنگ مکمل طور پر ایک مختلف کاروباری ماڈل ہے، لیکن یہ غور کرنے کے قابل ہے کہ کیا آپ گاہکوں کو آرڈرز اور واپسی کو مکمل طور پر سنبھالنے سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ مالک مارکیٹرز کوئی بھی مصنوعات بالکل فروخت نہیں کرتے ہیں، اس کے بجائے وہ ایک ای کامرس خوردہ فروش کے لیے پروڈکٹس کو فروغ دیتے ہیں، اور جب کوئی صارف ایک منفرد ریفیرل لنک کے ذریعے خریداری کرتا ہے تو کمیشن وصول کرتے ہیں۔ اگرچہ مالک مارکیٹنگ ایک اشتہاری کاروباری ماڈل ہے جو کہ خوردہ خلق کے برخلاف ہے، یہ فوائد فراہم کر سکتا ہے جیسے کہ آغاز یا اوور ہیڈ لاگت کو کم سے کم کرنا، جبکہ آپ کو سامعین بنانے یا پیسہ کمانے کی اجازت دیتا ہے۔ جب آپ اپنے سامعین کے لیے پروڈکٹس کو فروغ دیتے ہیں تو فروغ کا نتیجہ ہوتا ہے